few years this basketball federation, and also to increase the popularity of basketball in India and to improve the standard of Indian basketball. The Basketball Federation of India has hosted many international FIBA events for the last 5-6 years successfully in India. ये प्रेसिडेंट है वो And Basketball International Federation has appreciated the Indian Basketball Federation for the smooth conducting and also with great challenges. And our aim is to create more opportunities, and also the Sports Authority of India, Government of India doing their job, but the National Federation needs to come up on their own. Whatever government you support, we have to come up on our own to improve the standard and to create more opportunities for basketball players in our country. And recently, the Basketball Federation of India, we started this 3-on-3 new concept in our country. 3-on-3 league was successfully organized by the Basketball Federation of India in 20 cities. Almost 9,000 and add basketball players. They played basketball in the respective cities, and it was a great opportunity for promoting basketball in 3-on-3. Now, the Basketball Federation of India is trying to organize 5-on-5 league. Basically, now it is like Chennai. Chennai will have Tamil Nadu, Kerala and Pondicherry. Then Kolkata. These are all city. These are all cities in the name of catchment. These teams will be playing in these names, like Mumbai, Maharashtra and Gujarat. Kolkata, East, Northeast states, Chandigarh, Punjab and Haryana, Bangalore, Karnataka, Telangana and AP, Delhi, Rajasthan, J&K, Uttarakhand. So these teams will be playing in 4 cities initially. These teams will have a great opportunity for young basketball players in our country. I request our Secretary General, Mr. Chandramukhi Sharma, to take over. Thank you very much, President. On behalf of the Basketball Federation of India, I again welcome all of you. Because in national capital, I think we are meeting for the first time officially. Before this, we were having a lot of activities in Bangalore. As President advised all of you, all the international events have been conducted there. The reason for that is that in Asia, we are having one of the best facilities in Bangalore. So that's why International Federation is banking upon us, on Indian Federation, under the leadership of Dr. G. Govinda Raj, to conduct all the events. So like he was apprising that initially we started with a 3-on-3 league where 9,000 players have played, almost 400 teams they have registered on their own on our platform. So it was a very big boost for the game in the country. Now we have decided that we are going for a national league on 5-on-5.
This first year, we are starting with the 6 teams, as President informed you. So these cities will have the catchment area from the neighboring state. We are going to start this in the month of October, first phase. In IBM, this National League, we are giving a lot of opportunities to all the young budding players, because the more competition is there, more games are there, more skills will be improved, and more people will come and watch the game in various cities, because somehow we are having only national with us, so the national public participants are not there, only teams are coming and going. So now it is a basically home and away concept which we are bringing, where 2 teams will play in 2 matches, one in their home state and other in other home state. It will give a lot of advantage to the fans, supporters and budding players to see their mentors, players from their state, to how they are playing, how they are having their skills, and in future when all this, we are having more players with us, so we are going to increase this next year hopefully from 6 to 12. INVL is a basically, the concept is not a competition. This is league basically, but the league is a more competition, more games are, it is a some sort of practice. Earlier we are using only having this national championship and camp. Now league is a platform where players are going to play more game and having a more skills with different coaches at different levels. So that is a part of the practice. What about preparation of Asian Games? Asian Games after this, because once league is there, then we will set the team. Whatever best team will be there. Out of this place we will find now initially we are having 12-15 players. Now with this help, now we are having 70 players with us. So it means more talent will be there, more players will be there. We will shortlist all these players from this league only. ये तो कोई ऐसी बात नहीं। कितनी तैयारी है आपकी? पहले एशियन गेम्स की तैयारी तो कर रही होगी। तैयारी प्लेयर्स करेंगे सर। तैयारी प्लेयर्स खेल रहे हैं, खेलेंगे इसमें से जो बेस्ट होगा फिर इसका नेशनल कैंप उससे पहले 3 महीने लगता है हमारा वो सुनना है। हरीश शर्मा जी जहाँ छोड़ देते उसके कितने नजदीक पहुँचे हैं? आप किसका टेस्ट पूछ रहे हैं? आपने कितनी तरक्की की है? हिंदी में बताएं सर। हाँ जी। बास्केटबॉल ने कितनी तरक्की की है हरीश शर्मा जी की? ये उसकी तरक्की तक पार्ट है क्योंकि अब टीम हमारे पास अच्छे प्लेयर आ गए हैं, अपने प्लेयर आ गए हैं हमारे पास। अब हमारे पास 70 प्लेयर होते उससे पहले आपने कभी सोचा नहीं लीग शुरू हो सकती है कभी, क्योंकि प्लेयर थे ही 70 हमारे पास। It's appreciable. हाँ जी। It's appreciable. Because for league we got players na. Initially we are not having that much players with us. Now we can have 80 almost 80 players with us. That's why we have divided into 6 teams. So one thing which I want to say, You are part of the. Yeah. You are not a press. I'm saying that things will not change. You are from. You are from the. I'm saying something in your favor. No. Let the press people come along. हेलो सर, Let the press people please. सर ये जो लीग और आप लोगों का जो मैचेस आप लोग रख रहे हैं, मेरी सजेशन ये है कि आप प्लेयर तो खेल रहे हैं और ऐसे तो प्लेयर कोई भी खेलता रहेगा, लेकिन जब तक प्रॉपर कोचिंग नहीं होगी तब तक खेल का स्तर ऊपर नहीं बढ़ेगा। ये तो आप जानते ही हैं। क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। तो मेरा आपसे ये पूछना है, क्या हम अगले साल वेट करें कि बच्चों का स्तर ऊंचा हो? क्या आपके पास कोई प्रोग्राम है जो आप इमीडिएटली उनको कोई नेशनल लेवल का या इंटरनेशनल का बास्केट प्लेयर बाहर से मंगाएं और उनको बच्चों को कोचिंग दें? क्या आपके अंदर ये आपने कोई प्रोग्राम रखा है? तो कृपा करके बताएं। देखिए, जहाँ तक आप कोच की बात करें, मैंने आपको कहा पिछले 3 साल से हमारे पास फॉरन 4 साल फॉरन कोच है, तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास अभी 50 कोच हमने नए तैयार किए हैं, क्योंकि ही इज इंटरनेशनल अपना इंस्ट्रक्टर आल्सो। और दूसरा मैं क्योंकि सब आप सब बैठे हैं, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट टाइम वी आर इंटरेक्टिंग, सो एक चीज़ कहने की मिस हुई हमारी नेशनल मीडिया से, फॉर विच समहाउ वी ब्लेम आवरसेल्व्स। We are proudly say in the last 6 years, almost 27 players from the country has gone to the various NBA countries, various institutions in the US, which was a very big achievement for the country as a basketball. मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम, देयर आर न्यूमरस गेम्स, इवन नेशनल गेम्स भी होती हैं,
तो क्या आपके बच्चों ने कोई उसमें पदक जीता है? अगर जीता है तो उसका भी आप कृपा करके वर्णन करें, क्योंकि ओलंपिक तो अभी बाद में आएगा, पहले हमें जो बाकी गेम्स हैं वहाँ पे तो अपनी मजबूत स्थिति करनी पड़ेगी। वही कह रहा हूँ, इस बार पिछले 2 साल से जो हमारा फॉर्मेट है एशिया कप का चेंज हो गया। पहले तो सिर्फ एशियन गेम थे, एशिया ओशियाना और मिडल ईस्ट भी आ गए। जैसे हम इस बार पिछले बहरीन को अपना से हुआ मैच हुआ है, ईरान को हराया, तो ऐसे से हम जो बाहर जाके, और ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि फॉरेन सॉइल पे जाके भी टीम को हरा के आ रहे हैं। और उसका एक पार्ट मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि आप देखिए ना कि अगर इंटरनेशनल लेवल पे हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं या NBA अकेडमी लेके जा रहा है, उसका कोई रीजन है, बच्चों को कुछ टैलेंट है। कभी आरसी से पहले तो इतने स्टाइल्स प्लेयर कभी गए नहीं है, इंक्लूडिंग गर्ल्स। आई थिंक आउट ऑफ 27 अपना 8-9 गर्ल्स। और उल्टा कहीं ना कहीं हम लोगों को उसका ये लॉस हुआ है कि जो हमारे बच्चे बेस्ट थे, जिनको हमने ट्रेन करा होगा पीरियड ऑफ टाइम, नाउ दे आर नॉट अवेलेबल विद द नेशनल टीम, क्योंकि वो यूएस चले गए, एडमिशन हो गया, हम उनको रोक नहीं सकते। पर दिक्कत है कि कहीं ना कहीं हमारा जलवा बाहर जा रहा है ना, इसलिए उनको अपना प्लेटफॉर्म मिल रहा है। क्या आप उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं? हाँ, yes, और अगर आप कोई मंथली रिम्यूनरेशन दे रहे हैं तो उसका भी जिक्र मीडिया से करें। जैसे हमने अपना जब कोविड का टाइम आया था, जो हमारे अच्छे प्लेयर्स थे, अप्रॉक्सीमेटली अपना मोर देन 74 प्लेयर्स जो गवर्नमेंट जॉब नहीं करते, कोई जॉब नहीं करते, वी हैव गिवन द रिम्यूनरेशन अप टू 75,000 टू देम। और अभी भी जिसको जरूरत पड़ रही है, इवन किसी को मेडिकल जरूरत पड़ रही है, किसी को एडमिशन के लिए जरूरत पड़ रही है, एजुकेशन जो पढ़ रही है उसका फीस हम दे रहे हैं। कुछ चीज़ें हम डिस्क्लोज इसलिए नहीं करते क्योंकि वो प्लेयर में ये हीन भावना ना आए कि वो पैसा वहाँ से फेडरेशन से आ रहा है। तो कुछ जो जैसे हमने 75,000 दिया सबको दिया, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं, सबको अनाउंस करा। बट हाँ, कई ऐसे प्लेयर हैं जो आपको आपके टाइम पे आपका हो सके स्टेज पे अपने पैसे इंटरेक्ट करें कि जी हमारी सारी एजुकेशन, हमारी सारी बोर्डिंग लॉजिंग जो है वो फेडरेशन लिए, वो हम अपने रिवील नहीं करना चाह रहे। देयर आर सर्टेन रीजन फॉर दैट, बट यस वी आर डूइंग। And one more thing, in this league, players. Thank you so much for your discussion, and you have given us such a wonderful information about the federation. You have already said that we need to popularize the basketball. It is not a question, but it is. No, you can suggest, please. Yeah, it is All a question. It's not a my question, but it is just. all well-meaning suggestions are welcome. Sir, like cricket, we see that it is always available on. अगर ये दिक्कत है तो उसमें दिक्कत टीवी में सिर्फ ये आती है कि जब तक एक स्टैंडर्ड गेम का नहीं बनता तो टीवी उसको दिखाता नहीं है। मैं बड़ी ऑनेस्टली आपसे शेयर कर रहा हूँ, टीवी को जब तक लगता है रेवेन्यू जो लीग है ये इसका हमारा एक बेस बनेगा, इसके बाद प्रोफेशनल लीग के लिए हम इसके बाद ही जाएंगे। जिस वक्त हमें लगेगा, क्योंकि हम जैसे वो दूसरे OTT प्लेटफॉर्म हैं उन पर हम टाइप कर रहे हैं, जैसे 3-3 लीग हमारा सोनी लीग पे चला था, तो कहीं ना कहीं हम उसको देख रहे हैं, क्योंकि जब पॉपुलर की बात की उससे रीजन सिर्फ यही है कि हमको उसको देखने के टीवी फॉर्मेट को देखने की कहाँ हमारी कमी प्लेस में आ रही है, तो हम उसके लिए जो भी पॉसिबल होगा उस स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए करेंगे। वंस वी आर कन्विंस्ड और ये लीग से शुरू हो गया, तब तक प्रोफेशनल लीग जब आएगा वो नेशनल टीवी के साथ ही आएगा, उसके बिना नहीं आएगा। तो ये सारे स्टेप फॉरवर्ड हैं टुवर्ड्स गोइंग फॉर अ प्रोफेशनल लीग। इनिशियली प्रोफेशनल लीग में हम जैसे मैंने आपसे शेयर करा कि वी आर नॉट हैविंग प्लेयर्स विद अस, प्लेयर्स अभी आ जाएंगे। नेक्स्ट ईयर अगर हमारा 12 टीम्स बनता है तो नेचुरली वी आर हैव अ गुड पूल विद अस, सो आउट ऑफ दैट पूल वी कैन गोल फॉर प्रोफेशनल। Mr. Govindraj, it sounds good that Federation is going to organize the National Basketball League 5-5, but we are a little bit confused because we have seen so many 3-3 basketball leagues happening in Delhi and nearby area in the northern part, even in the western part also. 2 years back I have covered a 3-3 league in Mumbai. So I have covered more than 35 matches in a single day. That league ended at around about midnight, started at 9 AM in the morning. So there are so many private entities who are organizing this type of league, and they are putting confusion to the players and the parents by saying that your child will be able to play in the Olympics or in the Asian Championship through our leagues. So the private clubs, they are getting to take those players directly into the system until they come into the system, play for nationals and for the state, and then play for national and come for leagues. So if they are doing on their own, it is their sweet will. See, there is one thing, legitimate and illegitimate. All legitimate players will be under the system. How would I know as a parent that which is the legitimate or which is the illegal? It is very difficult for a parent
to decipher that which is legitimate and which is No, illegitimate. the state associations will be there, they have to enroll under the state association, and then state association will be enrolled to the national federation. This is the system. Is the federation has kept the window open for sponsorship of the matches? Yes. And are you getting some sponsorship? Yes. Or you need Yes. to process? Yes, the president. Gotcha. The last 7 years, we have conducted 6 international matches. No, And everything which is बढ़िया बढ़िया. So without that, because each international event is costing about more than 8-9 crores. So so without sponsorship, we cannot conduct. One thing is not clear to me, the concept, the format 5x5. So to develop for our players, or it is the copying from the foreign. No. We have 5-1-5 plus. Please, once again. Is the 5x5 format, is the concept, it is only for the development for our players, or it is the only copy from the foreign? No, basically league, what is league is to popularize the game, like I said, because if Chennai and Kolkata, 2 teams are there, so they will play one in their home, one match in their home state and other. So it will bring more competition, more fan following, more budding players to see the game. So it is not nothing, it is not a professional league, it is a national league. So national league is a more competition based to popularize the game in the various cities.